ट्रकिंग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए उतनी ही ज़रूरी है जैसे हमारे बॉडी के लिए ब्लड ज़रूरी है. So truck driving is a very difficult job. The quality of roads as well as the condition of the trucks and the long distances invariably results in some kind of a physical problem. It's very hard. मैं मतलब ट्रक ड्राइवर्स को सैल्यूट करता हूँ इस काम के लिए कि वो इतनी हार्ड जॉब कर रहे हैं और स्माइल फेस के साथ. So in my experience, I have seen many drivers after age of 50. They are suffering a lot because of the back pain, knee pain and head pain, everything. हम जो है ना पहले जो है ना गाड़ी चलाते थे, उसके बाद जो है ना अपना गाड़ी लिए, उसके बाद अपना ट्रांसपोर्ट खोले, उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया. मेरा एक्सीडेंट होने के बाद क्या है ना कि जो मेरा नस कहीं का दब गया था, तो मेरा इलाज जो है ना यहाँ भी रांची में करा रहे थे, तो रांची में ठीक नहीं हुआ. तो वहाँ जब गए, वहाँ जब चेक किया तो बोला क्या तो अगला जन्म में ठीक होगा आपका, और नहीं तो जो है भगवान ही ठीक कर सकते हैं. न्यूरो ने बोला कि नस आपकी इंजरी हो गई है, इसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है, हड्डियाँ दिन पे दिन गलती जा रही हैं. काफ़ी टाइम के बाद ये दर्द हुआ रहा, हाथ मेरा काम ना करे, मेरा हाथ काम नहीं करता. ट्रक चलाने में एक्चुअली क्या है सर, ये अपने को मान लिया टायर पंचर हो जाता है तो उसमें प्रॉब्लम आती है. उसमें अपने को टीम की ज़रूरत रहती है. मान लिया अकेले से काम नहीं होता, एक बंदा काम नहीं कर पाता, तो उसमें ऑपरेटर, क्लीनर, ड्राइवर मिलकर काम करते हैं. एक्चुअली क्या एक बार मेरे को है वो रड स्लिप होने से मेरे थोड़ा हाथ में पेन हो गया था. The truckers especially, they knew about aches and pains and whatever, but they put it down to the nature of the beast or the work they do, not realizing that there is a cure for it. So after discussing with the various customers, with the drivers, we came to know there were many NGOs or organizations who were conducting eye camps for them, right? But there was no one who was taking care of their health or their muscular, or you can say ergonomic pains which were having because of long drives. They used to have 8 hours long drive on the trucks. And that's the kind of relief which we thought we will provide there to them. Transport Aarogyam Kendra is one of our very unique initiatives. I think we are in the business of funding commercial vehicles all over India. Typically our customer base, either direct or we fund some fleet operator. Eventually these trucks run the length of roadways in India, driven by drivers. So Transport Aarogyam Kendra through HDBFS we have started 3 years ago. There was a wonderful program we are partnering with HDBFS through which we could able to reach nearly 30,000 truck drivers and associates in providing physiotherapy support. So HDB has come up with this very, I would say, innovative initiative of providing that health support for the truck drivers. And most important, these are the services which are provided freely there, right? Otherwise, he has to go to a particular clinic, either charitable or a private clinic, where he has to pay expenses for that. And normally, the wages are not so high, they can afford that, and that's why one of the reasons to reduce out-of-pocket expenses, we are focusing on providing the free medicines, free doctor consultation, and free physiotherapy in across all the clinics there. मेरा 39 इयर्स का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है. हम जनरल पब्लिक को, ऑफिशियली, नॉन ऑफिशियली पब्लिक को सारा का इलाज किए हैं, लेकिन ट्रकर्स के लिए, ड्राइवर के लिए, खास करके इस सब के लिए मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि इन लोगों के लिए भी समाज में काम किया जा रहा है. किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या किसी भी और कंपनी ने जो इससे जुड़ी हुई है इस काम के साथ, किसी ने भी ऐसा इनिशिएटिव ही नहीं लिया आज तक, और ना ही सच्चे मन से और 100% साफ दिल से किसी ने ऐसा कोई काम किया. I think interestingly this started out more as a one-time camp in a couple of these locations, as more like a just one event for a couple of days. And we set up the first camp in Sanjay Gandhi Transport Nagar. This is one of the biggest hubs of, you can say, in India, where around 20,000, 30,000 trucks are at a time available, right? And there was a huge opportunity.
तो हम कैंप हर सैटरडे लगाते हैं। ट्रांसपोर्ट नगर के 2 से 2.5 किलोमीटर के एरिया में 4-5 लोकेशन फिक्स है, हम वहीं पर जाते हैं। उनको एक दिन पहले इन्फॉर्म कर देते हैं जिनकी जगहें होती हैं कि लोकेशन पर हम आएंगे, कैंप लगाएंगे। तो फिर हम अपना सारा सामान, मेडिसिन वगैरह, शुगर की हैं, फिजियो की मशीनें सब लेकर आते हैं लोकल एरिया में। वो पेशेंट लेकर आते हैं और बहुत सारे लोग हमें जान भी गए हैं क्योंकि बहुत टाइम से हम वर्क कर रहे हैं। तो वो हमारे पास आते हैं, अपनी कंप्लेंट बताते हैं और हम उनका समाधान करते हैं। जब से HDB फाइनेंशियल सर्विस का यहाँ पे कैंप लगने लगा है तब से लेबर लोग को बहुत फ़ायदा हुआ है। जो किसी भी प्रकार का फिजियोथेरेपी का इनको ज़रूरत होता है, ये लोगों को फ्री यहाँ पे फिजियोथेरेपी दिया जाता है, फ्री मेडिकेशन दिया जाता है। तब से इन लोगों को बहुत राहत है। So from what started out as one-time camps soon became a static clinic in multiple locations and have involved industry associations with that, because it's not an effort which is taken independently by a separate entity, but the community has to be equally involved. So we first setup was in Sanjay Gandhi Nagar, then we had a permanent setup in Ranchi, followed by Namakkal, and then in Kalmoi in Mumbai. And we've got a completely well-equipped center where these truck drivers are, they're coming into access services. We have a physiotherapist in place, we have a general physician in place, and of course we have a counselor also who's there, and we have a complete field team who are able to kind of direct the truck drivers to come to this center. But HDBFS, understanding the whole concept, they have now provided very good medical equipments for exercise purpose, very good monitoring team supporting us. The trained, experienced physiotherapists are really providing wonderful care for the visitors, the truck drivers. That attracted more truck drivers coming into the physiotherapy. So there is already a huge gap, you can say, between the availability of physiotherapists and the approachability of them for the truck drivers. Through this initiative, we are trying to bridge that gap so that all those physiotherapists are available, easily available for the truck drivers who want that facility, and we are trying to bridge that gap between both of them. அப்படிங்கிற இது இருந்தது. பட் ஆனால் வந்து எங்களுக்கு கிராமாலயா சைடும் HDBFS சைடும் எந்த ஒரு ஃபோர்ஸும் இல்லை. ரெடிட்டு எங்களை ஃப்ரீயாக வேலை செஞ்சு விட்டாங்க. அதனால் எல்லா பேசண்ட்டும் நம்ம கவர் பண்ணி இப்போ எங்களுக்கு எந்த ஒரு ஃப்ரீனஸ் இல்லாமல் ஒரு ஃபேமிலி மேனாக நாங்களால் இருக்க முடியுது. நம்ம டிரைவருங்கள்ட்டெல்லாம் சொல்கிறேங்க, 2 நாளாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்த பிறகு பரவாயில்லைங்க, நம்ம டிரைவருங்கள்ட்டெல்லாம் சொல்லி அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்க சொல்கிறோம். मेरे पैर में गुल्ला पड़ा था, मैं चल बिल्कुल नहीं पाता था, बिल्कुल भी। किसी ने स्माइल फाउंडेशन को मुझे बताया यहीं कि वहाँ चले जाना, वहाँ डॉक्टर हैं, फिजियो है, हो जाएगा आपका। धीरे धीरे मुझे एक्सरसाइज बताई गई, डॉक्टर साहब ने बताई, खुद करा, यहाँ घर पे भी करवाया, दवाइयाँ दिया, मैं थोड़ा चलने लगा। आज मैं अपने बच्चे भी पाल रहा हूँ यहीं से। इम्प्रूव है जो ये पहले जो ये थोड़ी सी फीलिंग नहीं होती थी, अब इसमें हल्का हल्का फील होता है और ये मोमेंट जो है हल्की हल्की मोमेंट होती है। बहुत फ़र्क है सर, तभी तो मैं कह रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि यहाँ के लिए मेरे को लिए बहुत, एक समझिए मेरे लिए भगवान ऊपर वाले ने मेरे को रास्ता निकाली, सुधार है। मेरे दर्द भी ख़त्म हो गई और मेरा काम भी सारा चल रहा है, समझे। अगर ये ना होता तो मैं बिल्कुल खाट पे पड़ा रहता था, मैं चल एक कदम भी नहीं पाता था आगे। मैं अकेले यहाँ आ जाता हूँ, सीढ़ी अपना पकड़ उकड़ के जैसा होता है यहाँ चला जाता हूँ। तो बेटा आना बंद कर दिया, अभी जो उसका जो स्कूल जा रहा है, उसका जो खिलवाड़ हो रहा था स्कूल से, भविष्य से, वो बंद हो गया, वो अपना स्कूल जा रहा है। मेरा 2 इंची भी पैर ज़मीन से नहीं उठता था, अभी 4 इंची 5 इंची ज़मीन से मैं सीढ़ी चढ़ जा रहा हूँ, आता हूँ। यहाँ अच्छा से इलाज होता है, डॉक्टर साहब बहुत कोऑपरेट किए। इस क्लिनिक का बात मैं अपने गांव तक बोलता हूँ कि मैं राजपुर नगर में क्लिनिक है, वहाँ मेरे को समझो कि एक भगवान ही मिले। சைடு எஃபெக்ட் நமக்கு எதுவும் கிடையாதுங்க, உடம்புக்கும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும், அதனால் ஃபிசியோதெரப்பி வந்து நமக்கு பெஸ்ட்டானது। लेकिन आज मैं बहुत ठीक हो रहा हूँ। अब मेरे को ना एकदम 100% विश्वास अंदर से हो गया कि मैं यहाँ से ठीक होकर चल के दौड़ के जाऊँगा। So I think it's a huge service to this group of people who was not aware but are now finding resources to be able to address the issue, which will benefit them in the long term.
Nowadays they are working more number of days in the field. That brings them more economic support for them. That will make their life better. எங்கே நீடு இருக்கோ அந்த மாதிரி போவாங்க. ஸோ அப்படி போகிறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டாக்டருக்கு ஒரு அசிஸ்டண்ட்டாக ஒரு ஹெல்த் எஜுகேட்டர் இங்கே இருப்பார். ஸோ மீதி இருக்க 2 டாக்டருக்கும் ஃபீல்டில் 2 பேர் இருப்பாங்க. இதுதான் இங்கே சிஸ்டம். ஸோ அப்படி பார்க்குறப்போ மண்டே டு சாட்டர்டே வரைக்கும் ஃபுல்ஃப்ளெஜ்ஜாக இந்த ஆஸ்பத்திரி இருக்கும். இன்னும் சொல்லப்போனால் சண்டே தவிர மற்ற எல்லா நாளுமே இருக்கும் அப்படின்றத உண்மை. ஸோ இவங்க எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு டெடிக்கேட்டட் டீம், என்டையர் டீம். இவங்க வந்து மணிக்காக சம்பளத்துக்காக ஒன்றும் ஒர்க் பண்ணல இவங்க. While we are taking care of their financial needs through our financial wing, through our corporate social responsibility, we are also taking care of their health. That's a very important thing, you know. We are associated with their life. It's not that we fund them and they earn it and they pay back. We also are a part of their life. இதனால் எங்களோட பிஸ்னஸுமே கூட இன்னும் அதிகமாகிருக்கு. இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் பிஸ்னஸுக்காக சம்பாதிக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் எங்களை வாழ வைக்கிற இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் கஸ்டமர்ஸுக்கு நாங்கள் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று திரும்ப செய்யணும், கைமாறாக செய்யணுங்கிறதுக்காக இந்த கேம்ப் மூலமாக எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்களுக்கு நாங்கள் சேவை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இது இன்னும் தொடரும்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். When I see the smile on the faces of the people, on the truck drivers, I think it gives a self, you can say, motivation also and self-satisfaction also, because it's not about everything is not about money, everything not about making profits. You know, they can earn their livelihood better. Since you're reducing their out-of-pocket expenses at this moment of time, so that money maybe will be going for the education of their children. It's a very good feeling. It's a very nice feeling that somewhere someone's life has been impacted as a result of the work that's been done by FPI, and of course that's not possible without the support of HDB. So I would say once again a big huge thank you to HDB for allowing us to innovate on this project as well. I would like to give my heartfelt appreciation and my regards to Gramalya, FPI India and Smile Foundation for the relentless work and the support in making our social responsibility a great one and helping us reach to the last mile, to the last corner of the transportation sector. Thank you very much.